गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह एक्टिविटी है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। व्हाट आर द फैक्टर्स? फर्स्ट इज sunlight is necessary essential for the photosynthesis. Carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Chlorophyll is essential necessary for the photosynthesis. We all know that in the photosynthesis what will happen. In the photosynthesis we all know that food manufacturing process, that is food manufacturing process, CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it forms the C6H12O6 plus O2. 6 here is the 6. Okay, now glucose this glucose is stored in the form of a starch. That foods is stored in the form of starch in the leaf. So from this experiment to demonstrate that a starch is formed during the photosynthesis. कैसे करते हैं? तो हम लोग प्लांट्स लेते हैं, प्लांट को एक पॉटेड प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट्स को फिर हम डार्क रूम में रखेंगे। एक पॉटेड प्लांट को 3 days to 4 days, 3 से 4 दिन इस पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रखने के बाद क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट या फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, इसमें जितने भी स्टार्च स्टोर्ड था लीफ में वह यूज कर लेगा। That means the process what is going on, this starchification is going on. After the this starchification, again the plants keep in the sunlight for photosynthesis. Now that plant do photosynthesis and form the starch. How can we detect the presence of a starch? Now pluck the leaves, pluck the leaf from the plants and boil in water, and then later on after that leaves boil in water bath alcohol. This is the process of water bath alcohol. Take a big test tube, insert the leaves and put some alcohol in the test tube, and now set up a beaker keeping on the stand mask and a flame. When the water boil, keep the test tube inside the water and till the alcohol boil. When the alcohol boil, the leaf loses the color. यहाँ पे लीव्स जो है अपना क्लोरोफिल रिड्यूस कर देगा, रिमूव कर देगा लीफ से, और ये कलर आपको अल्कोहल में दिखाई देने लगेगा। देन आफ्टर रिमूव द लीफ फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, और उस लीफ को फिर हम लोग थ्रोली ब्रश से साफ कर लेते हैं एंड सम डाइल्यूटेड एसिड वाटर्स through a brush. Now put the iodine solution. अब लीफ पे अब साफ करने के बाद देखेंगे कि पूरा क्लोरोफिल रिमूव हो गया और यह क्लोरोफिल नहीं रहने पे ट्रांसपेरेंट और दिखेगा, ट्रांसपेरेंट। देन आफ्टर वी पुट सम, अब एक लेंगे टेस्ट ट्यूब लेंगे, सॉरी ड्रॉपर, ये ड्रॉपर ऐसे होगा। नाउ कीप द
dropper inside the diluted iodine solution. And iodine solution put on the leaves पे डालेंगे, the whole leaves becomes the dark, यह dark हो जाएगा. Now the leaves becomes dark. What will happen before adding the iodine solution? The leaves was looking transparent. This experiment show that the putting the iodine solution drop on the leaves, it change their color, turns blackish. So this black color show the indication of presence of a starch. That means experiment to demonstrate that a starch is formed during the photosynthesis. यह एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस में स्टार्च होता है. Now the sunlight is necessary for the photosynthesis. Sunlight को जरूरी है, सनलाइट फोटोसिंथेसिस में, इसका हम लोग कैसे या एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो इस पहले तो प्लांट को लेंगे, प्लांट को डार्क रूम में 3 से 4 दिन 6 दिन तक भी रखेंगे. रखने के बाद उसको सनलाइट में लाएंगे. कैसे लाएंगे? तो एक बेल जार लाएंगे, ऐसे इस बेल जार में, और एक प्लांट को ऐसे ही छोड़ देंगे फ्री विदाउट बेल जार. इस प्लांट के बेल जार को फुल्ली हम लोग वैसलीन के द्वारा बंद कर देंगे. नाउ कीप द प्लांट इनसाइड दिस जार and put some here in the petri dish KOH crystal, potassium hydroxide. Potassium hydroxide in the petri dish, it absorb all the carbon dioxide present in the petri dish. जितने भी petri बेल जार में होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा. अब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा तो सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड किसी एक के एब्सेंट होने के बाद वह फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड या जार में एब्सेंट कर लिया, वह नहीं है, तो क्लोरोफिल रहने के बाद भी, सनलाइट मिलने के बाद भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा. फिर इस लीफ को हम लोग प्लग करेंगे, वाटर में बॉयल करेंगे. बॉयल करने के बाद वाटर बाथ अल्कोहल में इसको बॉयल करने के बाद डीकलराइजेशन. हियर इज द डिस्टार्चिफिकेशन, दिस रिमूवल ऑफ स्टार्च फ्रॉम द लीव्स by keeping the plant inside the dark room for 3 to 4 days. Now put the apparatus in the bell jar in the presence of sunlight by putting the KOH, potassium hydroxide. Potassium hydroxide absorb all the carbon dioxide which are present in the bell jar. Now in the presence of sunlight, the photosynthesis will not take place due to the absence of potassium hydroxide. That is, potassium hydroxide absorb all the carbon dioxide present in the bell jar. Now plug the leaves and boil water bath alcohol. In the alcohol we cannot heat directly because it is a highly flammable liquid. So we boil in water. So the leaf remove its color. Now the decolorization takes place after that leaves completely wash through the brush, and now the leaf put on the iodine solution, leaves does not change their color. So the absence of dark color, there is no change takes place in the leaves. It shows that the carbon dioxide is necessary for the photosynthesis. Experiment to show that carbon dioxide is necessary for the photosynthesis. Again another experiment to show that sunlight is essential for the photosynthesis. ठीक इसी तरह से उसमें भी प्रोसेस करते हैं. प्लांट को डार्क रूम में रखते हैं, डिस्टार्चिफिकेशन करते हैं, लेकिन सनलाइट में क्या करते हैं कि उसके लीफ के ऊपर, ये लीफ मान लीजिए है, दिस इज द लीफ, इस लीफ पे हम लोग यह डार्क कलर का एक चार्ट पेपर काट के सेलो टेप से ढक देते हैं.
होती है लीफ में। और जब देखते हैं जब डार्क कलर से सनलाइट उस लीफ को नहीं मिलता है, फोटोसिंथेसिस 2-3 घंटे कराते हैं, फिर ये प्रोसेस करते हैं अल्कोहल वाटर बाथ अल्कोहल में बॉयल लीफ को बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद उस थ्रोली वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन देते हैं। आयोडीन का सॉल्यूशन देने पे ये वाला पार्ट उस लीफ में ये व्हाइट हो जाएगा, रेस्ट पार्ट आपका ब्राउन कलर में डार्क ब्राउन कलर चेंज कर देगा। दिस सो दैट the experiment show that sunlight is necessary for the photosynthesis। sunlight बहुत जरूरी है। देखा आपने कि ब्लैक कलर लगाए थे उस पार्ट में क्लोरोफिल था, लेकिन सनलाइट नहीं मिला। कार्बन डाइऑक्साइड था, सनलाइट नहीं मिला, फोटोसिंथेसिस नहीं किया, दैट मीन्स स्टार्च नहीं बना। बाय पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन that iodine solution indicate the presence of a starch। again that क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग प्लांट कैसा देखते हैं, लीफ कुछ ऐसे रहते हैं जैसे बीच बीच में वो वेरीगेटेड लीफ, कुछ कलर व्हाइट है, कुछ ब्लैक है। समटाइम्स हियर इज द व्हाइट, समटाइम्स ग्रीन, समवेयर येलोइश एंड देयर वे आर द व्हाइट पार्ट। तो इस प्लांट को फिर वेरीगेटेड लीफ वाले प्लांट को डार्क रूम में रखते हैं। डार्क रूम में रखने के बाद डिसस्टार्चिफिकेशन होगा। डिसस्टार्चिफिकेशन होने के बाद फिर हम उस प्लांट को सनलाइट में लाएंगे 2 से 3-6 घंटे तक। 3 घंटे सनलाइट में लाने के बाद लीफ को प्लग करेंगे। लीफ प्लग करने के बाद फिर उसको वाटर में बॉयल करेंगे। वाटर बॉयल करने के बाद वाटर बाथ अल्कोहल में बॉयल करेंगे। अल्कोहल बॉयल करने से डीकलराइजेशन, कलर रिमूव करेगा। कलर रिमूव करने के बाद फिर लीफ को थोड़ी वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद उस पे आयोडीन का सॉल्यूशन देंगे। तो देखेंगे कि लीफ का जो जो पार्ट था, सपोज दैट ये हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये पता करके रखेंगे एक व्हाइट पेपर पे या ट्रेसिंग पेपर पे कि कौन सा, मान लीजिए यहाँ ग्रीन नहीं था, यहाँ ग्रीन नहीं था, यहाँ ग्रीन नहीं था, तो ये सब कलर में आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे वो कलर चेंज नहीं करेगा। दैट मीन्स दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट दैट determine that chlorophyll is necessary for the photosynthesis। These are the factor affecting photosynthesis: sunlight, carbon dioxide and chlorophyll। If there is any absence sunlight, carbon dioxide and chlorophyll, the photosynthesis will not take place। During the photosynthesis the plant do prepare their foods in the form of glucose, and that glucose are stored in the form of a starch, and we can determine if there is a starch present in the leaves or not by the indication of presence of a starch। This so that experiment to demonstrate the essential of sunlight, carbon dioxide and chlorophyll। Is the sunlight is necessary for photosynthesis? Yes or not? Yes. By the we can conclude with the help of experiment carbon dioxide is essential for the photosynthesis by putting the KOH। KOH is a potassium hydroxide crystal which absorb the carbon dioxide। In this all experiments show that these are the factor affecting photosynthesis। We can experiment, do photosynthesis is there or not, that's all। क्या बनाइए।